भारत माता की जय। भारत माता की जय। અહીંયા ઉપસ્થિત પ્રદેશના મહામંત્રી સુનિલભાઈ પાટીલજી, જિલ્લાના અધ્યક્ષ દીપકભાઈ, તેમજ મંડળના અધ્યક્ષ સુરેશભાઈ, તેમજ અહીંયા મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત મારા વેપારી ભાઈઓ, આપ સૌને મારા નમસ્કાર। આપ સૌ જાણો છો કે અત્યારે 25 સપ્ટેમ્બરથી 25 ડિસેમ્બર સુધીનું આ અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે। તો આપણા યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી, જેમણે હર ઘર સ્વદેશી ઘર ઘર સ્વદેશી વોકલ ફોર લોકલનું જે અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે, તો એમાં આપણા સૌ વેપારી ભાઈઓને ખ્યાલ છે કે અત્યારે જીએસટીમાં પણ તમને એનો ટેક્સનો ઘટાડો કર્યો છે। તો એનાથી જે બેનિફિટ તમને તો મળશે જ, પણ એનાથી બેનિફિટ લોકોને પણ મળશે। તો દિવાળીમાં મોદીજીએ આ સૌને ગિફ્ટ આપ્યું છે। એની સાથે સાથે હું તમને એ કહેવા માગું છું કે ભારત દેશ એને આત્મનિર્ભર બનાવવાનું છે। આપણા મોદીજીનું સપનું છે કે ભારત દેશને આત્મનિર્ભર બનાવવાનું છે। તો એ આત્મનિર્ભર કેવી રીતથી બનશે? તો જ્યારે આપણે આપણા ભારત દેશની અંદર કે આપણા પ્રદેશની અંદર આપણે સ્વદેશી વસ્તુનો ઉપયોગ કરશું, તો આપણે આપણા ભારત દેશને આર્થિક રૂપે સ્ટ્રોંગ બનાવી શકશું। તો આપણું મિશન છે કે આપણે સ્વદેશી વસ્તુઓ બનાવીએ, પોતાના દેશની અંદર જ બનાવીએ અને એનું વેચાણ પણ આપણા દેશની અંદર જ થાય, તાકી પોતે ઉત્પાદન કરશું, પોતે વેચાણ કરશું, તો ભારત દેશની અંદર જ આપણા પૈસા રહેવાના છે। તો એનાથી શું થશે? આપણો ભારત દેશ વિકસિત, વિકાસશીલ અને વૈભવશાળી બનશે। તો હું આપ સૌથી એક ઉમ્મીદ અને અપેક્ષા રાખું છું કે આપ સૌ આજથી સંકલ્પ લેશો કે આપણે સ્વદેશી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરીએ અને આપણા પ્રદેશ કે દેશની અંદર જ એનું સેલ પણ કરીએ, જેનાથી આપણે આપણા સમાજને કે પ્રદેશને સ્ટ્રોંગ બનાવી શકીએ આર્થિક રૂપે। તો બાકી તો તમને ખ્યાલ જ છે, તમે વેપારી છો એટલે આઈ થિંક અહીંયા હોલસેલ માર્કેટ પણ હશે, જેનાથી તમે આપણી વોર્ડ નંબર 12માં અમે લોકો જઈને આવ્યા મોર્નિંગમાં, તો ત્યાં પણ બહુ મોટી સંખ્યામાં વેપારી ભાઈઓ ઉપસ્થિત હતા। તો એ લોકો ત્યાં હોલસેલરનું મતલબ માર્કેટની અંદર બધી જગ્યાએ વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરે છે। તો આઈ થિંક અહીંયા પણ એ રીતે થતું હશે। તો ભારત દેશની અંદર જે આપણી આર્થિક સ્થિતિને સ્ટ્રોંગ કરવાનું કામ સૌથી કોઈ કરતું હોય તો એ વેપારી લોકોનું છે। તો જ્યારે આપણે સજગ થઈશું તો જ આપણે આ રીતથી કે જે મોદીજીનું જે સ્વપ્ન છે એને સાકાર બનાવી શકશું। તો મેં આપ સૌથી ઉમ્મીદ રાખું છું અને વિનંતી પણ કરું છું કે આપણે આજથી સંકલ્પ લઈએ કે આપણે સ્વદેશી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરીએ અને આપણે એને ભારત દેશની અંદર જ એ વસ્તુનું વેચાણ થાય। નમસ્તે। ફાલ્ગુનીબેન પટેલ, જેઓ અત્યારે આદરણીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું એક મિશન ચાલે છે સ્વદેશી અભિયાન। એ સ્વદેશી અભિયાન દાદરા નગર હવેલી દમણ દીવના કન્વીનર છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી દાદરા નગર હવેલી દમણ દીવના સેક્રેટરી છે, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે। એમની સાથે ઉપસ્થિત છે સુનિલભાઈ પાટીલ, જેઓ સિલવાસના છે અને આપણા દાદરા નગર હવેલી દમણ દીવ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહામંત્રી છે। તો આપણે બધા આપણા મહાનુભાવોનું જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરી લઈએ। આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે સમસ્ત દેશમાં આ સ્વદેશી અભિયાન ચલાવ્યું છે અને છેલ્લા 2 મહિનાથી અને હજુ આવતા જાન્યુઆરી સુધી ડિસેમ્બર 25 સુધી આ સ્વદેશી અભિયાન ચલાવવાનું નક્કી કર્યું છે। અને બધા જ વેપારીઓને, ખાસ કરીને વેપારીઓ એટલા માટે કે એ લોકો સ્વદેશી અભિયાનને સૌથી વધારે સારી રીતે ચલાવી શકે અને કસ્ટમરને વધારે સારી રીતે સમજાવી શકે। તો ભારત દેશના દરેક રાજ્યમાં આદરણીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે આ સ્વદેશી માટે લોકોને જાગૃત કરવા માટેનું એક આંદોલન ચલાવ્યું છે, જેની જવાબદારી દાદરાનગર હવેલી દમણ દીવમાં આપણા ફાલ્ગુનીબેન પટેલને સોંપવામાં આવી છે। એવો છેલ્લા 2 મહિનાથી દાદરાનગર હવેલી, દમણ દીવ બધી જગ્યાએ જઈને વેપારીઓ અને ઘણા બધા ગ્રામજનોને મળે છે અને સ્વદેશી અભિયાન શું છે, આદરણીય મોદી સાહેબ શું કહેવા માંગે છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શીર્ષ નેતૃત્વ શું કહેવા માંગે છે, એ દરેકને જણાવે છે, સમજાવે છે। તો આજે આપણા માટે બી ખુશીની વાત છે કે આદરણીય મોદી સાહેબનો સંદેશો લઈને ફાલ્ગુનીબેન પટેલ આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે અને ચોક્કસ આપણને બધાને સમજાવશે, જણાવશે। સ્વદેશી અભિયાન તો આપણે હંમેશા ટીવીમાં જોયા જ કરીએ। મોદી સાહેબની દરેક સ્પીચમાં गुजराती तो समझते हैं, मैं तो गुजराती बोल रहा हूँ, हम लोग गुजराती में बात करते हैं। तो मोदी साहब हमेशा अपनी स्पीच में बोलते ही है स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल, ये सब बोलते ही है। तो इसके बारे में डिटेल में आज हमें फाल्गुनीबेन पटेल बताएगी।
तो सुनील भाई भी कुछ बताना चाहेंगे। अभी मैं हमारे महामंत्री श्री सुनील भाई से विनती करूंगा कि आप पार्टी के महामंत्री हो तो जरूर पार्टी के विचार और इस मिशन को लेके जो फाल्गुनी बहन आई है उसके बारे में हमारे व्यापारियों को बताएं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं कल जो चुनाव के नतीजे आए हैं और उस नतीजे में आप सभी का प्रेम जो मत के रूप में हमारे प्रत्याशियों को मिला है, तो कराड़ में जो हमारे दीपक भाई के धर्मपत्नी जो चुनाव लड़ रहे थे, सरपंच के उम्मीदवार थे, वो भारी मतों से जीते हैं और जिला पंचायत भी हम यहाँ पर जीते हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही कहते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि इतिहास में पहली बार दादरा नगर हवेली के नगर पालिका में 15 में से 15 सीट ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। एक भी सीट विपक्ष को मिली नहीं है। साथ ही जिला पंचायत की अगर बात करूं तो 26 जिला पंचायत सदस्यों में से 24 जिला पंचायत सदस्य ये भारतीय जनता पार्टी का भगवा यहाँ पर लहरा है। सरपंच में भी हमारे 26 में से 16 सरपंचों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और 16 सीट यहाँ पर सरपंच की भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और कुछ सीट हम काफ़ी कम मार्जिन से आ रहे हैं, वो हम जीत सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हमसे भूल होगी, उसके कारण हम 2-4 सीट ऐसे आ रहे हैं कि 2800-150 मतों से हम आ रहे हैं। तो उसका भी हम आत्मचिंतन आत्ममंथन करने वाले हैं। तो खास तौर पे आज की जो बैठक है ये व्यापारियों के लिए हम लोग आप सभी से मिलने आए हैं। तो इस कार्यक्रम के संयोजक फाल्गुनी बहन पटेल जी, जिला के अध्यक्ष दीपक भाई प्रधान जी, मंडल के अध्यक्ष सूरज भाई और सभी उपस्थित व्यापारी मित्रों, मैं आपके बीच पिछले शायद से 1.5 महीने पहले भी आके गया हूँ। जब हम स्वदेशी अभियान की शुरुआत कर रहे थे, उस अभियान के दौरान हम आपके हर दुकान में आकर हमने एक स्टिकर लगाया था कि घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। और साथ ही जीएसटी बेनिफिट के लिए मोदी जी के आभार के लिए हमने वीडियोस भी बनाए थे। तो मुझे कहते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि जीएसटी का बेनिफिट आम जनता को काफ़ी अच्छा मिला है। दिवाली में गिफ्ट के तौर पे आदरणीय मोदी जी ने हमें दी है और साथ ही आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया है कि हम सभी को स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करना है। स्वदेशी चीज़ों का हम उपयोग करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश विकासशील बनेगा, देश वैभवशाली बनेगा। मित्रों, जब हम भारत में बने हुए उत्पादनों का उपयोग करेंगे, आज भारत हमारी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आई है। जिस दिन भारत का हर नागरिक भारत में बनी हुई चीज़ों का उपयोग करेगा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बनके आगे आएगी। तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। हम सभी ने अपने जीवन में जो भी हम उपयोग करते हैं वह सारी चीज़ें स्वदेशी हो, मेड इन इंडिया हो, भारत में बनी हो, भारत में निर्मित की गई हो, ऐसी सभी चीज़ों को हमें उपयोग करना चाहिए। रक्षा क्षेत्र के अंदर हमने ऐतिहासिक काम किया है और आप सभी को पता होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में टीवी में आप सभी ने सुना होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान को जो हमने सबक सिखाया, जो 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया, माँ भारती का माथा हमने ऊपर किया, तो उस दौरान जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो हमने उपयोग किया था वो भी भारत में निर्मित मिसाइल थी, भारत में बनी हुई मिसाइल थी। ये हमारी ताकत है। भारत आज हर क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बन रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो मैं आप सभी से अपील करता हूँ। एक दूसरी बात मुझे याद आई कि कोविड महामारी में, कोरोना काल में पूरा विश्व चिंतित था और भारत में भी कोविड काफ़ी संख्या में आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाता था। ऐसी परिस्थिति में कोविड की पहली स्वदेशी वैक्सीन अगर किसी ने निर्माण की तो भारत ने की। तो इससे हमारे लोगों की जान तो हमने बचाई, लेकिन साथ ही 56 जितने विदेश जो हमारे देश है बाहर के, वहाँ पर भी हमारी स्वदेशी वैक्सीन का उपयोग करके वहाँ के लोगों का जान बचाने का काम भी भारत ने किया। तो ये ताकत हमारी भारत की है।
तो हम आप सभी से अपील करते हैं कि आप व्यापारी हो, आपके पास हर ग्राहक आता है तो आप उनको स्वदेशी के बारे में बताएं, स्वदेशी के बारे में जागरूक करें और एक नारा दे कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। तो आप सभी से अपील है कि आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। एक घंटे में सभी व्यापारी लोग इकट्ठा हो गए एक हमारा जो मोदी जी का मिशन है उसके बारे में चर्चा करने के लिए। और संडे है, आप सब लोग भी बिजी रहते हो, मार्केट एकदम बिजी शेड्यूल था, फिर भी आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और दूसरा भी मैं ये मीटिंग के बाद मैं और भी एक आभार मानना चाहूँगा। सुनील भाई ने जैसे बताया तो आपकी रखोली पंचायत तो पहले ही बिन हरीफ विजेता हो चुकी थी। सुरेश भाई की वाइफ प्रगति बहन एज अ सरपंच और उनकी पूरी टीम, तो आप सब लोगों ने उनको पहले बिन हरीफ विजेता बना दिया था। लेकिन उसके बाद में जब कराड़ पंचायत का इलेक्शन था तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि आप सब लोगों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयास था। आप लोगों ने अपने रिश्तेदारों को या जानने वालों को फ़ोन करके बताया था। मुझे सब वोटर्स बोलते थे कि हाँ इनका फ़ोन आया था, इनका फ़ोन आया था, तो आप सब लोगों का जरूर सहयोग था। और जो रखोलीना जे बिन हरीफ उम्मीदवारों છે કાંતુભાઈ હોય કે સુનિલભાઈ હોય કે ઉમેશભાઈ કે